फेल्सपार स्ट्रक्चर देखिबा तो फेल्सपार को सिलिकेट स्ट्रक्चर देखा टेक्टोसिलिकेट यदि कंपोजिशन देखिबो तार NaAlSi₃O₈ तो ए प्लेस टा होची तुमरा टेट्राहेड्रल साइड प्लेस देखि 3+1 होची 4:8:1:2 माने तुमरा जिते SiO4 टेट्राहेड्रल कंडीशन दोछ ताले हमरा एटा अछि टेक्टोसिलिकेट माने each tetrahedral will share with 4 oxygen. Each tetrahedral share all of its 4 oxygen. Each tetrahedral तार चारटा ऑक्सीजन को रखबो शेयर करबो तो जो चारटा ऑक्सीजन शेयर करथो मो तात्रे से प्रोड्यूस करछि कोन टेक्टोसिलिकेट स्ट्रक्चर मैं देखिया और डायग्राम देखि इमेजिन करे जे चारटा ऑक्सीजन चारटा को टेट्राहेड्रल एटी चारटा ऑक्सीजन लागियो एटोरे टेट्राहेड्रल लागियो एटोरे टेट्राहेड्रल लागियो एटी टेट्राहेड्रल लागियो ए जगह रे टेट्राहेड्रल लागियो सब जगह चारटा ऑक्सीजन अछि 2 3 4 एमती चारटा टेट्राहेड्रल लागो शेयर टोटल केतना टेट्राहेड्रल हेले चारटा टेट्राहेड्रल शेयर करछन्ती चारिटा टेट्राहेड्रल मोर सबरे तीनटा रे थिबो कोन सिलिकॉन गोटरे थिबा एल्युमिनियम चारटा को कोन सबरे सिलिकॉन नथि तुम कर गोटे एल्युमिनियम को कर रिप्लेस तेतिबे तुमरो फार्मूला रे एक्चुअली होबा कथा Si4O8 होता कोन Si4O8 टुडे को NaAlSi₃O होबा कथा टेट्राहेड्रल प्लेसेस रे मोर गोटे ऑक्सीजन सॉरी एल्युमिनियम मोर रिप्लेस एटी हम Si3 लिखछन्ती एटा Al लिखछन्ती तो एमती कंबाइंड तो मेटा लिख परियो ए प्लेस रे तो ए स्ट्रक्चर ता देखा है योर फेल्सपार तो फेल्सपार स्ट्रक्चर इट इज सिमिलर टू SiO2 सिलिकॉन तुम्हें तो क्वार्ट्ज नहीं तुम्हारा कोर्स है बट क्वार्ट्ज जो बड़ा से बड़ा बट ठीक है डिफरेंट अछि वो बेसिस तुम कोची डायग्राम देती Plagioclase structure amount tetrahedral Al varies in proportion relative to amount of CA2 Na2 plus मोरा हमरा जो कंपोजिशन अछि दीटा टाइप रे दिखा होते CA2 सॉरी CaAl2Si₂O8 और Na हेले को हे जो AlSi₃O8 तो जो एल्युमिनियम रो वैल्यू हो सिलिकॉन रो वैल्यू हो एटा डिपेंड करछि कि CaNO पे ताको अनुसार सेटा कोन वैरी करछि So in this type of structure, 4 tetrahedral will produce a ring. माने लिंक ही करे देखो चारटा टेट्राहेड्रल कौन छ लिंक ही कुछ 1 2 3 4 चारटा टेट्राहेड्रल लिंक ही करे ताको जे रोटे वैकेंट स्पेस बस क्रिएट हो साइड पर से जगह के भी आको माने से साइड को के ऑक्युपाई करिवे ना तो एमती देखो एमती जो 4 रिंग वाला देखो एवला सब अरेंजमेंट होती फेल्सपार 4 ठीक बात 84 और 4 और 20 के अरेंजमेंट ही सब वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है डिफरेंट दिखा रहा डिटेल देखिए ठीक बात डिफरेंट व्यू में तुम देखते देखा तो ये जो पार्ट है क्रिस्टल फेल्सपार स्ट्रक्चर मैं 2D रे एवला खाली डायग्राम कर परिबा
जोटा कि देखि पारे गोटे स्ट्रक्चर फेल्सपार स्ट्रक्चर এটা হচ্ছে তোমার फेल्सपार स्ट्रक्चर जो कहते चारिटा एमती रिंग बड़ा प्रोड्यूस करेंगे एंड ईच फॉर ऑक्सीजन आल्सो दे विल शेयर विथ अदर टेट्राहेड्रा मतलब दीटा साइट आसी गोटे T1 T2 तुमका परे गोटे सिलिकॉन रे गोटे एल्युमिनियम राइट एटी टेट्राहेड्रा ले कोन दीटा जगह दीटा रहउछन सिलिकॉन और एल्युमिनियम then also chemical composition chemical composition you can write down the series so different series is thoda the Plagioclase series between Na Feldspar और Ca Feldspar between Albite और Anorthite now what series is tomorrow Anorthoclase and also between K Feldspar and Albite हाँ जी K Feldspar और Albite so K Feldspar और Albite ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି Anorthoclase series ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଆସେ Anorthoclase ତ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ କଣ कि K Feldspar and Albite they will only show solid solution or series at higher temperature माने higher temperature ही mix है mixing means which तुम एमती भाव जितने दीटा सॉलिड जिनस आनलो कि जो बड़ा तुम आनलो डाली रे गोडी मिसा तुम डाली आनलो मिसई दल तो तुमरो समान को तुम मिक्स कर पारे बट दे आर सेपरेटेड कोटा डाली तुम कोटा गोडी तुम इजीली सेपरेट कर पारे जब तुम क्षीर रे पानी मिसाओ ताल कोन हो से मिक्स हो जिवे एंड से अलग गोटे प्रोडक्ट भलिया बाहरी राइट सॉलिड सॉल्यूशन मीनिंग होइसे क्षीर पानी मिसी गला भलिया जदि तुम हायर टेम्परेचर रखिबो ताले के फेल्सपार और अल्बाइट मिसी जी मिसी कोन प्रोड्यूस करियो एनोथोक्लेस तो आ कॉन्संट्रेट फाइलेट माने जे कोनोसी टेम्परेचर रे भी भाबे तांकर फॉर्मेशन टेम्परेचर रे तो मिक्स हेबे करेक्ट माने डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिक्स हेबे तो फॉस्फेट 10% नेकी फाइलेट 90% नेकी मिक्स कर करेक्ट किंतु के फेल्सपार अल्बाइट गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर ऊपर ही से माने मिक्स हेबे ताटू टेम्परेचर तळे आला माने के फेल्सपार अलग आइजो अल्बाइट अलग आइजो ताको हम कोनती एक्स सॉल्यूशन कोन एक्स सॉल्यूशन एक्स सॉल्यूशन माने कोन ए देखो तुम जो लिखा है कंप्लीट एसेंशियली दे विल शो कंप्लीट सॉल्यूशन बिटवीन अल्बाइट एंड एनोथाइट Plagioclase series now limited solid solution between potassium feldspar and calcium and limited solution between K feldspar and albite तो एमती डायग्राम करा जाए तो ये जगह तुम पाइबो अनऑर्थोक्लेस टेम्परेचर तो हाई टेम्परेचर कंडीशन को पड़ाई से तुम को पाइबो अनऑर्थोक्लेस पाइबो जते टेम्परेचर लो ही जो ए जगह कोन थिबे तुमर के फेल्सपार प्लस Na फेल्सपार बा के फेल्सपार अल्बाइट मिसी की प्रोड्यूस करते अनऑर्थोक्लेस जते टेम्परेचर लो हो जाए के फेल्सपार तार अलग आइ जो अल्बाइट तार अलग सेपरेट तो
तो तुम भाव जे हायर टेम्परेचर से क्षीर पानी वाला बिहेव करते लो टेम्परेचर रे तुम डाली गोड़ी वाला बिहेव करी सेपरेट तो ये टाइप ऑफ थिंग को हम कहते एक्स सॉल्यूशन व्हाट इज एक्स सॉल्यूशन which is solution before now they are not solution तो एबड़ा बिहेवियर अच्छी हायर टेम्परेचर रे देखा दी मिक्सेबल कंडीशन मोर हायर टेम्परेचर रे मिक्सेबल हेबे लोअर टेम्परेचर रे सेपरेटेड ताको हमें कहते कौन एक्स सॉल्यूशन जोड़ा हमर देखे कि के फेल्सपार और अल्बाइट इज वेरी इंपोर्टेंट हला के फेल्सपार और अल्बाइट देखा दी कौन एक सॉल्यूशन स्ट्रक्चर तो एठू तुम्हारा डिफरेंट पेट्रोलॉजी में पढ़ला में टेक्सचर कथा डिस्कशन करिया आगे बुझि परिबो नै तो एक सॉल्यूशन खाली तुम जानि परिबो केना हाई टेम्परेचर में मिक्सेबल लो टेम्परेचर रे सेपरेबल सेमते आ गुटे एग्जांपल होछ मन रखो ऑगाइट और पीजोनाइट हमें पढ़िथिले कोथरे पायरेक्सिन so these two also show X solution there are other example also जेते पढ़ी जीव से आंसर तुम्हें पाइबा डिफरेंट X solution एग्जांपल लेकिन हाई टेम्परेचर में मिक्सेबल लो टेम्परेचर रे सेपरेबल तो एग्जांपल ले परिबो तुम अमूल को ठंडा पानी मिसिबनी जब गरम पानी मिसा ये हॉर्लिक्स वेलिक्स गुरा सब शेयर करा जाए गरम पानी मिसते माने कोन मिक्सेबल हेबे इजी बा हाईली मिक्सेबल हेबे बा इजीली मिक्सेबल हेबे नले हेबे बहुत दिन से गरम पानी ही कोन मिक्स हो तो भाई ऑर्थोक्लेज प्लाजियोक्लेज हो कि फेल्सपार हो तार मेन कैरेक्टरिस्टिक होचे दे हैव टू सेट्स ऑफ क्लीवेज दीटा सेट क्लीवेज होचंदी अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पर ऑर्थोक्लेज ता तुम्हारा फ्लेसी रेड कलर আছে फ्लेसी रेड माने जो मटन कटा वाला जो देखा है जो पीस पूरा जो फ्लेसी रेड ताको बफ रेड कहले तो बफ रेड और फ्लेसी रेड कलर देखा जाए होची कोन ऑर्थोक्लेज ता कैरेक्टरिस्टिक कलर आ ग्रे टू व्हाइट कलर देखा जाए कोन मोरा प्लाजियोक्लेज যদি अधिक कैल्शियम कंटेंट थिबो ताले व्हाइट देखा हबो यदि सोडियम कंटेंट अधिक थिबो ताले ग्रे देखा ताने भाबो जे यदि मोर अनोथाइट अछि ताले एटा मोस्टली लाइटर कलर देखा यदि अल्बाइट अछि ताले एटा देखा हबो कोन ग्रे कलर अदे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कलरलेस आसीबो एटा नॉन क्लियोक्रिक आसीबो हला क्लिवेज टू सेट आसीबो आकर मेन इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होची ट्विनिंग ट्रस्ट ट्विनिंग हमें देखबा मैं माइक्रोस्कोप रे जति देखिथिबो ट्विनिंग सब देखि एटा हमरा ग्रेनाइट कोडा मोर ताते सब खाए प्लाजियोक्लेज जाओ फेल्सपार तो ये जो पार्ट देखो जाओ ये जो पोर्शन ने ठीक गोटे व्हाइट और डार्क स्ट्रिप आस व्हाइट और डार्क स्ट्रिप आसे ना नहीं एटा कहते हमें ऑर्थोक्लेज और ट्विनिंग कहते काल्सबर्ट ट्विनिंग तो ये गोटे पैच तुम गोटे साइड को आसो तो डार्क आसो गोटे साइड व्हाइट आसो ये जो पार्ट का वो देखो डार्क और व्हाइट स्ट्रिप अछि हां पूरा जेब्रा स्ट्रिप है सेवा देखा हुए ये जो पार्ट है तो एटा को हम कहते हैं प्लाजियोक्लेज ना प्लाजियोक्लेज ये पार्ट देखो तुम्हारे जो स्ट्रिप का बल से देखा है स्ट्रिप ही कर
ये जो पार्ट है देखो ये सब फेल्सपार ଜାଣିପାରିଲ ନାଇଁ ଆମର ଜେବ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହେଇଛି ପ୍ଲାଜିଓକ୍ଲେସ୍ ଫେଲ୍ସପାର ଏଠି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଏ ମଝିରେ ଏଇ କଲଟା କ'ଣ କ୍ୱାର୍ଟଜ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାର୍ଟ ରହିବ ସବୁ କ'ଣ କ୍ୱାର୍ଟଜ ये जो पैच में देखो गोटे डार्कर गोटे व्हाइटर गोटे गोटे साइड देखो गोटे साइड कौन तो डार्क अच्छे गोटे साइड व्हाइट अच्छे ये वाले डबल ऑर्थोक्लेज तो काल्सपार ट्विनिंग पर फेल्सपार is one of the most abundant constituents. Total for feldspar देखो among all minerals that are available within the crust, feldspar is 51%. feldspar क्या देखो 51% तापर आसिबो quartz which is 12%. Pyroxene 5%. So among all the feldspar मोर जो 51% फेल्सपार होची तादरो 39% होची प्लाजियोक्लेस फेल्सपार and rest 12% is your orthoclase का K फेल्सपार. So that's why feldspar is the most abundant mineral in the art crust. So most of this मोर जते granitic बा stick type of rock अछि बा lighter type of rock अछि सब में feldspar type. So most important constituent rock अछि granite. ग्रानाइट में फेल्सपार पाइबा ग्रानोडावराइट अछि अनोर्थोसाइट रॉक अछि जोटारे खाली प्लाजियोक्लेस फेल्सपार पाइबा तो एक सब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स वा ऑकरेंस अछि फेल्सपार